अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ओज़िमैंडियस की आज हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस और पैराफ्रेज करेंगे। रेफरेंस आप इसका इस तरह से देंगे, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओज़िमैंडियस रिटन बाय पर्सी बाइशी शेली, या आप इसको पी बी शेलरी सिर्फ लिख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट इसका इस तरह से लिखेंगे, द पोइट हैज़ ब्यूटिफुली लिंक्ड to pride and the wretched reality of life with an event. When a man gets power, he becomes proud, merciless, and cruel. He enjoys the luxuries of life and forgets his end. The poet has conveyed the idea that the feelings of superiority in a man are only self deception. The reality is death. फर्स्ट जो स्टैंजा है उसकी एक्सप्लेनेशन आप इस तरह से देंगे कि इन दिस लाइंस द पोएट टेल्स दैट ही मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन ओल्ड एंड डिजर्टेड लैंड. द ट्रैवलर टोल्ड हिम दैट ही सॉ टू बिग legs standing in the desert. The two huge legs, which were made of stone, were standing without the upper part of the body. The other part of the statue lay nearby. The arms and the face were broken, and it was in a miserable condition. It was half sunk into the sand. The sand and dust covered the body, yet the signs of displeasure and expression of ruthlessness and pride could be noticed on the face of the sculpture. The poet says that the skillful hands of the sculptor had left the accurate expression of the man into his sculpture. The expression of aggression, power, and pride was even obvious on the lifeless body of the king. The poet has tried to explain that immortality has a permanent impression on our body as well as on our soul, so it cannot be erased even we pass away. स्टैंजा 2 की एक्सप्लेनेशन जो है वो इस तरह से होगी कि इन दिस लाइंस द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड व्हाट वी कैन कॉल द मैसेज ऑफ द पोएम. As the traveler continues to describe what he saw in the desert, he says that there were some text written in the base of the statue. It reads as, वो text क्या था? My name is Ozymandias, king of kings, look upon my works, ye mighty and despair. The text tells that the name of the king was Ozymandias. He was the most powerful king. He ordered the kings to see his statue and feel belittled. But the tragedy is that now nothing remains except a lifeless statue of the king. The huge statue itself tells about the glory of the king, but now this huge and splendid statue has fallen the victim of nature. The broken pieces of statue are being vanished in the sand. The sand is stretching far away, and the statue of King Ozymandias is getting a thick layer of sand on it. It cannot be seen anywhere. अच्छा, स्टैंजा 1 की पैराफ्रेज आप इस तरह से करेंगे कि आई मेट विद अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंशिएंट लैंड हु टोल्ड मी दैट ही सॉ टू वेस्ट एंड trunkless legs of stone standing in the desert. The face of the statue was lying near the legs, half sunk in the sand, with wrinkled lips, frowning face, and sneering eyes. The description of the statue was a living example of sculpture's mastery, as appearing from the lifeless statue of the hand that mocked them and the heart that fed them once. Stanza 2 की paraphrase आप इस तरह से करेंगे कि on the pedestal of the statue a statement was written that the name of the king was Ozymandias, who was king of kings. The statement invites the visitor to look at the mighty achievements of the king and be fearful. Around the broken statue it was sand and loneliness all around without any sign of life. अच्छा, आज हमने पोइम आपकी जो थी ओज़िमैंडियस, इसकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस और पैराफ्रेज की. नेक्स्ट हम अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. चैनल को आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो ग्रामर का चैनल है इंग्लिश की लैंग्वेज सीरीज़, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जाके सब्सक्राइब करें और वहाँ से आप अपनी पूरी ग्रामर को सीख सकेंगे. और अगर आपको ये तमाम के तमाम नोट्स PDF में चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप पे स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको तमाम के तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.